आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीना रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीनों में बगावत की खलिश जिंदा है। अब मैं बिला ताखिर ऐश मोहम्मद को दावत सुखन देता हूँ कि वह आए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। ऐश मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद। Honorable President, respected teacher and my dear friends, I am going to deliver my speech on the topic ideal manner of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear audience, Allah has sent many prophets and messengers to guide the people, and Allah has sent many prophets. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the master of all messengers. He was last prophet. He was so honest, kindness and trustworthy. In his dealing the people used to call him Al-Amin al-Sadiq. He was very kind, sympathetic and soft-hearted. In his treatment he said, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." I have been sent to complete good manner. He was good-natured, kind-hearted, truthful and civilized. Hazrat Hassan bin Sabit radiyallahu anhu praised in these words, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. My dear elders, at last it is compulsory for every true Muslim to follow the conduct of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam properly. I pray that may Allah follow on way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. बाप माशाअल्लाह। ये थे ऐश मोहम्मद।